Bonjour, exercice numéro 1, page 13, salut, ça va. In this exercise, we're going to hear different dialogue and we're going to recognize the picture that which dialogue is goes with picture. So, alors, vous êtes prêts? You ready? Now, let's see the dialogue. Page 13. Salut, ça va? Activité 1. 1. Bonjour, Madame Dupuis. Bonjour, Monsieur Delage. Vous allez bien? Très bien, merci. 2. Bonne journée les enfants. À ce soir, maman. 3. Salut Manon. Tu vas bien? Salut Alice. Oui, ça va? Et toi? Ça va? 4. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, monsieur. À bientôt. Oh là là, c'était un peu difficile. This was a bit difficult for you, I suppose. Yeah, so what do you think? Which dialogue was for which picture first? Did you notice or? Yes, मैंने I अच्छा noticed. बताएं जरा कौन सा डायलॉग जो पहला जो ऑडियो था वो कौन से मुताबिक था? The first one will go with the third image, the man and a woman. Très bien, alors très bien. Le deuxième? Those dialogue will go with the fourth picture. There is those two children and a lady. Okay, we will correct everything again, no problem. And what about the third one sound? Third one sound will go with the second image of two ladies. The last one, okay. And the last one is go with the first one, the man in the shop. So let's see now. It seems to be okay, but now I'm going to break the dialogue one by one, and then we'll see which picture goes with which with dialogue. Okay. So okay, d'accord. Page 13. Salut, ça va? Activité 1. 1. Bonjour, Madame Dupuis. Bonjour, Monsieur Delage. Vous allez bien? Très bien, merci. Yes, so you were right. This was for picture C. Bonjour, Madame Dupuis. The man said, good morning, Madame Dupuis. Then she replies, bonjour, Monsieur Delage. Good morning, Mr. Delage. Vous allez bien? Then he said, oui, très bien, merci, thank you. So let's see for the second dialogue. 2. Bonne journée les enfants. À ce soir, maman. 3. So the second one is picture D, where you see two kids are going to school, okay? And you see bonsoir, au revoir. Let me read which was, here, the dialogue number 2. So dialogue number 2 it goes with D, that last picture. Bonjour les enfants. Actually, this lady is speaking and she said she's saying to her kids, bonjour les enfants. Have a nice day, children. Bonjour. Journée कहते हैं पूरे दिन को. Bonjour les enfants. Have a nice day, kids. Yeah, children. तो उन्होंने जवाब दिया बच्चे ने à ce soir maman. So see you again mama. शाम में फिर मिलते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह. So now number 3rd. Salut Manon. Tu vas bien? Salut Alice. Oui, ça va? Et toi? Ça va? 4. So number 3 is, do you have an idea? What is the correct picture for number 3? B. Yes, this one picture. So, salut Manon, tu vas bien? Hello Manon, are you going well? Salut Alice, oui, ça va et toi? Yes, fine, and you? Then she says, ça va. Okay. So now let me do the fourth one. Then I will be giving you some indication how can we recognize the dialogues without having much vocabulary in French. Okay. So that's the tip. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, monsieur. À bientôt. So definitely last picture goes with this one, and number A is for the last one. Bonsoir. जिस तरह bonjour था उसी तरह bonsoir, यानी good night. Bonsoir मतलब have a nice evening, have a nice शाम वगैरह, ठीक है. Au revoir, bye bye,
खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। Bye. Au revoir, monsieur. Bye, monsieur. Mr. Monsieur is Mr. ठीक है. À bientôt. Okay. À bientôt means see you soon. See you again. See you soon. See you अच्छा, soon. अब this type of picture you can understand very easily. तो illustration का मतलब ये होता है कि आप समझ जाएं. तो पहले डायलॉग में आप देखें, अगर हम फर्स्ट वाले में देखें, bonjour madame Dupuis, bonjour monsieur Delage, vous allez bien, très bien. So formal conversations थी, ठीक है. Formal बिल्कुल conversation. Secondly, एक लड़की की आवाज थी और दूसरे आदमी की आवाज थी. तो ये चीजें आपने बिल्कुल जो है ना वो करना. सेकंड वाले में bonjour les enfants, तो लेडीज की आवाज थी और बच्चों की, बच्चे दो थे तो आवाजें भी दो मिलकर आ रही थी, ठीक है. तो हम इस तरह हिंट से भी बिल्कुल पहचान सकते हैं. उसके बाद अगर हम डी का देखें, इसमें दो लेडीज थी और डायलॉग कहाँ चले गए, ये रहा. तो दोनों लेडीज की आवाजें थी, सैली मानो, और उनकी आपकी टून से पता लग जाएगा. और आखिर में जो था फोर वाला, ये था ना बोनसुआगे हुआ मिस्यू, इसमें दो आदमियों की थी दो. तो इस तरह हम इलिस्ट्रेशन से समझ सकते हैं अगर हमारे पास वोकेबुलरी फ्रेंच की ज्यादा ना ना भी हो. हो तो D'accord, très bien. Donc, on va arrêter ici. Merci. Au revoir. Alors, bonjour. Comment ça va? So, today we're going to learn how to ask how are you in French. Okay. कैसे हैं आप, कैसे हैं, ये पूछना हम सीखेंगे. अच्छा, for this we need to learn a verb which is aller in French first of all. ठीक है. So I आले wrote, yeah, aller. Aller is a verb which means to go. So aller can be used in various way, like for asking how are you going, वगैरह वगैरह, and even you can use it once you need to go to the cinema, to hotel, to school XYZ. So you can use the conjugations of aller like this. मिसाल के तौर पे, je vais au cinéma, I'm going to the cinema, and we can use for asking how are you वगैरह in French. So let's do the conjugations of aller. So we discussed in previous lesson how to conjugate aller also. So I remind you that aller is the first one verb in the whole French, and the only one verb in French which looks like regular verb. रेगुलर वर्ब इसलिए कि इसके आखिर में ई आर आ रहा है, ठीक है. बट ये इरेगुलर वर्ब है बेसिकली. इरेगुलर इसलिए कि ई आर आने के बावजूद जो इसकी जो कॉन्जुगेशंस है, यानी इसके जो कॉन्जुगेटेड वर्ब्स हैं, वो वर्ब्स की हम शक्ल नहीं है, यानी वर्ब से मिल नहीं रहे. देखिए मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, यानी वे, वाह, वो, आलू, आले, ठीक है. तो इसलिए जी जी इरेगुलर वर्ब है, ठीक है. तो अब कैन यू रीड विद मी द कॉन्जुगेशंस ऑफ आले. je vais, जवे tu vas, ट्यूवा il va, इलेलवा nous allons, न्यूज़ालो vous allez, वुजाले ils vont. इलेलवो. So अब इसका मतलब क्या है, je vais means I go, और it can be mean also I am going. तो हम ये कॉन्टेक्स्ट से समझेंगे कि जी I am going की बात हो रही है या I go की बात हो रही है, ठीक है. So je vais can be mean I go और I am going. tu vas का इसी तरह हो जाएगा you go, he she go, ठीक है. और एक और सब्जेक्ट हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, on. आपने सुना होगा कॉन्गो में on का मतलब भी होता है हम, ठीक है. मिसाल के on est français, si on mange la cuisine italienne, we are French, we eat Italian cooks XYZ, तो on भी एक सब्जेक्ट है. तो इसके on के मतलब है तीन चार मीनिंग्स है, यानी someone, we और people. someone, we और people, इसके तीन मीनिंग्स हो सकते हैं. so he, she and someone and people. va यानी he she goes, ठीक है. और nous allons, we go, vous allez, you go, और il slash elles vont, they go for male and they go for female. तो ये तो इसका एक सेंस है. अब how can I use this verb aller, I mean, in the sentences? So I can say, अगर ये एक sentence आप देखें इसको, je vais au cinéma. So we always need, once we construct a sentence, we need subject, we need conjugated verb, and sometimes adjectives also complement also. So the je vais means I go. ये prepositions भी यहाँ जरूरत पड़ी है हमें. je vais au cinéma means I go to the cinema. तो इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाएगा I go to the cinema, उर्दू में मैं सिनेमा जाता हूँ. तो ये जो prepositions ये चेंज होते हैं places के मुताबिक. हाँ, place मिसाल के तौर पे ओ cinema is a male place, that's why I wrote वो, ठीक है. piscine is feminine place which means swimming pool, तो I wrote ala, ठीक है. ale coal is also feminine noun. So we will discuss later how to change these prepositions for the places, but
but now my objective is to give you the translation of the ale and the complete conjugations verb of ale. अच्छा, अब ale को हम कैसे यूज करते हैं हाल चाल पूछने के लिए? तो मेन जो हमारा मतलब वो था जो टॉपिक, वो हाउ टू आस्क हाउ आर यू इन फ्रेंच. सो कमो एक वर्ड है फ्रेंच में, कमो मीन्स हाउ. ठीक है जी. अब फ्रेंच में मिसाल के तौर पे कोई शख्स से पूछना है किसी से कि जी तुम कैसे जा रहे हो, तुम कैसे हो, तो हम ये पूछेंगे कमो वतू, सिंपल वे में. ठीक है. इट्स बिट, हाँ, इट्स बिट इनफॉर्मल. इनफॉर्मल मतलब यानी ऐसा तरीका जो कि आप अपने दोस्त या अपने खास जो आपसे फ्री हो उस आदमी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोल सकता हूँ क्योंकि आप, सो इनफैक्ट इनफॉर्मल में वी कैन यूज फॉर द यंगर देन अस एंड with whom we are free. ठीक है. सो इनफॉर्मल मिसाल के तौर पे comment vas-tu monsieur Hassan, how are you going Mr. Hassan. ठीक है. ये हो गया आपका comment vas-tu. और you don't have to change the sequence because as we know that we can ask we can ask a simple question in different ways. So ये एक तरीका था. सवाल का मतलब वही how are you going, but I wrote the second way of the question. यही सवाल है कमो त्युआ, तो हम इस तरह भी बोल सकते हैं कमो त्युआ. ठीक है. बट क्वेश्चन मार्क शुड बी देयर. त्युआ कमो, और इस तरह भी पूछ सकते हैं. ठीक है. यानी ये सीक्वेंस जो चेंज होती है फ्रेंच के अंदर, ये आम सी बात है, इसको हम कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका है जो है वो कमो विथ यू, हाउ आर यू. से इट विथ मी, कमो विथ यू. Como va-tu? कमो विथ यू मीन्स हाउ आर यू गोइंग, तुम कैसे जा रहे हो, तुम कैसे चल रहे हो. बाकी अब आ जाए जी इसको पोलाइट फॉर्म में करें. पोलाइट मतलब फॉर्मल. ठीक है. तो हम इसको जी फॉर्मल वे में है वो. ठीक है. फॉर्मल ऑब्लिक POLIT, पोलाइट जो भी है. अब मिसाल के तौर पे कोई बड़ा आदमी है, हम उसका रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे करके पूछेंगे कम तलेवू मुस्से अली, हाउ आर यू गोइंग मिस्टर अली. से इट विथ मी, कम तलेवू. Como allez-vous? Say it another time. Comment allez-vous? Comment allez-vous? अच्छा, ये कोमा नहीं, कमो कमो. Comment? हाँ, comment allez-vous? How are you? ठीक है. अच्छा, अब देखें जी comment Comment allez-vous, allez-vous? comment allez-vous, how are you. अब बेसिकली होता है क्या है, इसमें वॉविल है ए फ्रेंच में. ठीक है. तो ए वॉविल है, तो इसके कमो का जो टी है वो ए से अटैच हो जाएगा, इसका साउंड इससे मिल जाए. लिएजन रूल अप्लाई होता है बेसिकली, इसीलिए कमो तले वो टी का साउंड ए से मैंने मिला दिया. ठीक है. सो कमो तले monsieur, हाउ आर यू गोइंग मिस्टर. एंड same question can be asked in other way around also. Vous allez comment, how are you going, वगैरह वगैरह. So answer always be in this way. Je vais bien merci. Say it with me. Je vais bien merci. Je vais bien, merci. Je vais bien. थोड़ा सा Je रिपीट करें. vais Je vais bien bien, merci. merci. I'm going well, fine, I'm fine वगैरह वगैरह. तो ये तो एक तरीका हो गया. अब हम यही इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन है वो हम और भी तरीकों से पूछ सकते हैं. Comment ça va. Say it with me. Comment ça Comment va. ça, हाँ, comment बोला. ça va? सो कमो सावा का Comment लिटरली ça va? मीनिंग है बेसिकली हाउ इट्स गोइंग, हाउ इट इज गोइंग. ठीक है. कमो सावा. और अगर आप अच्छे हैं तो आप बोल सकते हैं इट्स इट्स Ça ओके, va इट्स bien. फाइन. ठीक है. सो इट्स ओके, सावा बिया. It's okay. सो ठीक है. अब Ça मेरे va जरा bien. मुझे आंसर कीजिए. कमो सावा अली. Ça va bien. सावा बिया. वेल डन, वेल डन, très bien. अच्छा, I just wanted to remind you one more thing, that all the languages has certain or some tonations, tune की way. So whenever we ask a questions, ठीक है, all of these are questions. There are answer as well also, but I'm talking about the question. So we need to keep our voice pitch bit high. किस तरह? Comment Okay. vas-tu? Say it with me. Comment vas-tu? Comment vas-tu? हाँ, यानी इट शुड लुक लाइक दैट यू आर आस्किंग समथिंग. जैसे सवाल करने के लिए हम अपनी आवाज को थोड़ा सा आखिर में ऊपर ले जाते हैं, जैसे लाइक एरोप्लेन ऊपर जाता है. कमो आती हूँ अली, इस तरह. इसी तरह जो है वो सारे सवालात में होगा. अब ये वाला मेरे साथ बोले. कमो सावा. Comment ça va? हाँ, वेरी नाइस. तो टोनेशन जो है बहुत जरूरी होती है ओरल फ्रेंच में समझने के लिए. सो अब आ जाए इसका आंसर, सावा बिया. अच्छा, डिड यू फील द Ça va bien. डिफरेंस इन माय एक्सेंट और माय. तो अब देखें, मैंने कहा कमो सावा और सावा बिया. तो
तो आपको मेरी टून पता लग रही होगी, पहले वाले में मेरी टून ऊपर हाई थी, नीचे वाले में जब मैंने कहा सावा बिया तो मेरी टून नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है जी। हेलो, Yes, yes. ठीक है। सो दिस शुड बी लर्न बाय यू। अच्छा, सो इफ यू आर नॉट गुड, अनफॉर्चुनेटली, गॉड फॉरबिडन, अगर आप ठीक नहीं है, देन यू कैन से, कैन यू गिव मी अ क्विक सेकंड प्लीज। ओके, सो अब आ जाए जी नेगेशन, यानी अगर कोई सही नहीं है। सन व पा बिया, सन व पा बिया, इट्स नॉट गोइंग, Sun va. इट्स Okay. नॉट गोइंग इसको गुड। ठीक है, सन व पा बिया। ठीक है, sun va papia. ce ne va pas bien, it's not going well। अगर ये मुश्किल लगे आप सिंपल पा bien बोल सकते हैं। ठीक है, Pabi. नॉट गुड, नॉट गुड। अब मैं हर चीज का मीनिंग लिख नहीं सकता, तो नॉट गुड। अच्छा, अब अगर आपको ये कहना है आई एम बैड, ज़ाहिर है सवा माल, बाज दफा आदमी अच्छा महसूस नहीं करता, तो सवा माल, तो डायरेक्टली जवाब अभी दे सकते हैं सवा माल। ठीक है। So Savamal. Okay. how can you express your feeling if you are not good? Please can you reply me in French? Comment ça va, Hassan? Savamal. सवा माल, वेल डन। ठीक है, सवा माल। और अगर आप कहना चाह रहे हैं नॉट बैड, तो आप कह सकते हैं पा माल, नॉट बैड, यानी ये सो में आ Pamal. जाता है। ठीक है। Pamal. So I am about to finish here. Just let me complete this. Bof. Bof is another expression once you are not okay, not good. ना ही बुरे ना ही अच्छे, Like जिसको आप in कह रहे हैं। middle. ठीक है। Like in हाँ middle. हाँ, मिस, तो ये अब इस तरह भी हो सकता है, कम सी कम सा, कम सी कम सा। ठीक है। Come I have used अगर many times here. हाँ, कम सी कम सा, I've ठीक है। already used. और अगर आप बहुत अच्छे हैं तो फिर आप बोलेंगे सावा très bien, सावा très bien। Donc Ça va voilà, très très bien। bien. Donc je vous remercie d'être en ligne avec moi. Merci Monsieur Hassan. Au revoir, à bientôt.